Sat Shri Akal, you all are watching me at Punjab Kesari Navodaya Times. I'm Namita Sajde with you as always, and today I'm really thrilled to have with us an accomplished filmmaker whose documentaries have shed some light on the most pressing issues, I would say, of our time. Supriya Sopti Gupta, who is a critically acclaimed filmmaker who has made a name for herself in the world of documentaries, and she is with us right now. Let me welcome her on the show. Welcome, Supriya. How are you? Sat Shri Akal, Namita. I'm very well, and thanks so much for having me here to talk about my film Caught Out. It's of course been streaming since a couple of days, but चहल पहल बहुत है इस पे, बातचीत चर्चा काफी चल रही है. अब क्रिकेट भी ऑन है, आईपीएल ऑन है, तो काफी लोगों ने देखा है, तो हमें रोज कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है. So I'm delighted to talk to you. Absolutely, and cricket fever और ज्यादा हाई हो जाता है जब आईपीएल होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल. इन अ वे हमारा मौके पे चौका मारा हमने. यस, मौके पे चौका नहीं, मौके पे छक्का ही मार दिया आपने सीधा. नहीं उठाया तो मैच फिक्सिंग उठाया. देखिए, क्रिकेट जहां तक इमोशन और रिलीजन की बात है, लोग फॉलो करते हैं, पूछते हैं क्रिकेट को, और आपने सीधा मैच फिक्सिंग. मतलब कैसे हुआ ये, प्लीज बता दीजिए हमें जरा. देखिए, मैच फिक्सिंग इसलिए क्योंकि आई एम अ किड ऑफ द 90s में मैं जब बड़ी हो रही थी तो क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं था. ऑफ कोर्स फिल्में थी, हम थिएटर जाते थे. मैं बॉम्बे से हूँ, तो जब फ्राइडे को पिक्चर आती थी हम जरूर पिक्चर देखने जाते थे. लेकिन उसके अलावा जब इंडिया खेलती थी तो घर पे और चलना बिल्कुल अलाउड नहीं था. तो अगर आपको कहीं खाना खाने जाना हो या पढ़ना हो, सब कुछ हटा के हम क्रिकेट मैच देखने बैठ जाते थे. तो we know, अब तो आप देखो क्रिकेट इतना बड़ा बन गया है. It's become a huge industry as such. There's so many leagues happening all over the world. लेकिन तब it was a little different. और अब 20 साल आगे, हमें पता है कि कुछ हुआ था इंडिया के क्रिकेट के इतिहास में. There was something wrong. There was some scandal that broke. लेकिन हमें ये नहीं पता था कि क्या हुआ है. वो उसकी जो डिटेल्स हैं, वो जो जूसी डिटेल्स हैं, वो शायद लोगों को पता नहीं. और हम चाहते थे कि हम ये जो डार्क पीरियड था क्रिकेट का, इस पे थोड़ी सी लाइट शेड करें, लोगों को बताएं क्या हुआ. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो लोग थे जिन्होंने ये स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट किया, हम उनके एंगल से बताना चाहते थे. क्योंकि इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, ये एक ऐसा दौर था जब लोग बात करते थे, अरे ये मैच तो फिक्स था, अरे ये मैच तो, हम लूजली बोलते थे, अरे ये कैच ड्रॉप किया, दिस इज फिक्स्ड. लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था. सो दिस वाज रियली एविडेंस दैट इट वाज रियल. हमारा जो वर्स्ट नाइटमेयर था वाज कंफर्म्ड विद दिस स्कैंडल. अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, सिंस यू योरसेल्फ हैज बीन इन द शूज ऑफ अ जर्नलिस्ट, है ना, सो वो फैक्ट्स इकट्ठा करना, लोगों के सामने सच लेकर आना, ये इंटरनली बिल्ड होता है, मुझे लगता है हम लोगों में, कि अगर कुछ सच्चाई है तो वो सामने लेकर आए. बट देन हाउ ऑब्जर्वेंट वाज यू एट दैट टाइम, एंड इतने सालों के बाद इस टॉपिक को उठाना, व्हिच इज अ बिग थिंग, आई बिलीव, है ना. तो ये कैसे थॉट आया दिमाग में, या कैसे इंक्लाइन हुई आप कि हाँ, इस टॉपिक पे मुझे डॉक्यूमेंट्री. You have made some more documentaries इससे पहले भी, मुंबई माफिया एंड लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैड बॉयज वाला भी, राइट? Yes, Bad Boy Billionaires. Yes, बिल्कुल. तो जैसे आपने कहा नमिता, yes, मैं फॉर्मर जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो ये डिग करना has become second to my nature. हमें this becomes the purpose कि let's find out what is happening. But cricket एक ऐसी चीज है which is something of public interest. It was something then and even now, but then more so because we were so invested in it. Cricket में जान जहान हमारा सब कुछ लग जाता था तभी. अभी तो different avenues हैं, distractions हैं, तो फिर भी cricket का, although there is importance, it has its place. But then cricket meant something completely different. तो जब ये idea आया, जब मैं अपनी फिल्म पिच कर रही थी, ये वाला in a way stood out for me क्योंकि it is such an important story of my growing up. 90s में जब मैं बड़ी हो रही थी, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, आई थिंक इंडिया के घरों में, हर घर में एटलीस्ट एक ऐसा पर्सन होगा जिसने ये 90s का इतिहास देखा, जिसने देखा कि कुछ हुआ था इंडियन क्रिकेट में. और हम चाहते थे कि हम ये इसको वी ब्रिंग दैट टू लाइफ. सो इट इज नॉट एन इजी वन, क्योंकि लाइक यू सेड, क्रिकेट इन इंडिया इज सॉर्ट ऑफ अ रिलीजन. इट्स सो इम्पोर्टेंट.
हमारी पब्लिक इतना नाराज हो सकती है अगर कुछ गलत हो, स्पेशली क्रिकेट में, क्योंकि ये हमारे भगवान थे, स्पेशली देन। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए तब हुआ, वो इन अ वे एज अ जर्नलिस्ट एंड फिल्म मेकर मेरे लिए अब था कि देयर इज नो रूम फॉर एरर। इसमें अगर हम कुछ बताएंगे, इट हैज टू बी फैक्ट चेक्ड, it has to Absolutely. be something, that you cannot make allegations. So although हमने इंटरव्यूज में बहुत कुछ सुना, बहुत कई लोगों ने अपनी कहानियां बताई, अपने एक्सपीरियंसेस बताए, um, as journalists and as filmmakers who are working for a big platform, which is an entertainment platform, this is not an investigative platform jahan par film aayi hai, it was our duty to ensure that whatever went down was checked and cross checked. तो हमने लीगली बहुत कुछ चेक करवाया, हमने अपने रिसोर्सेज एक ही पर्सन से नहीं, काफी लोगों से चेक किए, क्योंकि देखिए इसमें जो रेप्यूटेशन जो प्लेयर्स की है, यू कैन ईदर मेक देम और कंप्लीटली रूइन देम। एंड हमसे ज्यादा तो आई फील प्रेशर तो उन लोगों पे हुआ होगा जिन्होंने ये स्कैंडल को 90s में इन्वेस्टिगेट किया। मैं उनको अनसंग हीरोज इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये ऑर्डिनरी पीपल हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की। मैंने तो फिर भी उन्होंने जो कहा था, जो रिपोर्ट आई, उनके बेसिस पे हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए एंड वी पुट इट on as a film, but for them they were actually collecting these things. Agar aap film dekhenge, you will realize there were journalists that did sting operations. Now you can imagine sting operation करना आसान बात नहीं है, और ये मामूली लोग नहीं, ये आपके कंट्री के टॉप प्लेयर्स को इन्होंने स्टिंग किया जो एडमिनिस्ट्रेशन के थे। तो आप सोच सकते हो कि इतना पंगा लिया होगा उन्होंने, इफ आई कैन यूज दैट टर्म, इन लोगों से, टू ब्रिंग आउट, टू अनअर्थ द ट्रूथ एंड शो अस द डार्क साइड ऑफ क्रिकेट, जो हम कभी जानना नहीं चाहते थे। तो ये जो फिल्म है, इन अ वे इट इज एन ओड, इट इज रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम द 90s जिन्होंने ये काम किया और जिन्होंने इस मुद्दे को प्रोत्साहन दिया एंड ब्रॉट इट टू लाइट। एंड वहीं से if you see a lot of changes have come into cricket, there has been some cleaning up as well. And so, for anyone who's a cricket fan or anyone who likes crime and corruption, this is something that you must watch. But I have one question, Supriya, which I have the urge to ask it to you. Ki, as a documentary filmmaker, right? There should be a balance for the desire to tell a compelling story that you have made. Obviously, ये balance आपने create किया है, and along with that, the accuracy and objectivity, if I would say. तो ये balance create करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge है. How did you do that? Bilkul, Namita, and I'm very heartened to hear this because this is a very journalistic question, for us too. I'm not just a filmmaker, because I'm also a journalist, and I understand the importance of balancing a story. I understand the importance of not tainting a story with opinion. This is not an opinion that I've put out, these are hard facts that we've put out. Of course, we had one side of the story, which is the investigators who brought to light what had happened, the murky dealings, the dark secrets of cricket. But we also wanted to balance it with the, what the players may have gone through or what their side of the story was. But unfortunately, aap dekhen, we tried reaching out to the players, but there is a conspiracy of silence. ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये तो जो CBI officer हैं, वो अपनी report में उन्होंने लिखा है, we were met with a conspiracy of silence from the players because they refused to talk about certain things. So even now, you don't have players coming out and openly saying match fixing or, what the dark secrets, whether it happened, didn't happen. They're all, of course, refuting it. The CBI, on the other hand, have evidence that something had gone wrong. There were murky dealings. तो हमने कोशिश तो बिल्कुल की, क्योंकि राइट टू रिप्लाई सबका बनता है. अगर वी आर अलेजिंग दैट क्रिकेटर्स वर इन्वॉल्व्ड एंड देयर वाज सम रॉन्ग डूइंग, वी हैव टू गो टू द अदर साइड. सो वी मेड दैट अटेम्प्ट टू रीच आउट टू द पीपल. We also have Mohammad Azruddin, the former captain's lawyer, who is on board, talking about his point of view. So, that's how you can, as a filmmaker, try and balance opinion and balance thoughts and views and facts, and put out a story which is balanced in nature, which is very important to be able to do today. Absolutely. और उन सारी बातों का मुझे लगता है आपने बखूबी ख्याल भी रखा है कि किस तरह से आप एक बैलेंस क्रिएट करो, चाहे जितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए. मैं एक बात जरूर पूछूंगी सुप्रिया, हाउ मच इंक्लाइंड आर यू योरसेल्फ टुवर्ड्स क्रिकेट? I'll be very honest, Namita, I was more inclined to cricket in the 90s than I am today. अब तो देखो, क्रिकेट हमेशा टीवी पे जमा हुआ है. It's great for the country, it's great for players, it's great for sports, it's great for entertainment.
but sport meant something so sacred to us in the 90s. There was that element, that nail biting finish ke kya hoga, wo maza I don't think अब आता है. Of course IPL final तो हम देखते हैं because your allegiance to your team. मैं मुंबई की हूँ और अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो even if I'm in Delhi I'm rooting for Mumbai, तो उसमें वो मजा आता है. So the flavor, the enthusiasm, all of that is still there. But I wouldn't say cricket इतना sacred नहीं है जितना वो 90s में था हमारे लिए. Somewhere ये scandal ने, it was a wake up call. हमें बताया कि even players are capable of falling prey to these tactics and the dangers that are lurking around big money and corruption and all those sorts of things. So in a way वो थोड़ा सा damp हुआ. लेकिन अब maybe WPL के साथ कुछ change हो. I'm women आई हैं स्पोर्ट्स में, so it's nice to see. आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये जो हमने फिल्म बनाई है, it was helmed by women. So I had a producer, Megha Mathur, another incredible producer from Mumbai. This was my directorial debut. तो आप देखो जो प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स का, जो हमारे पार्टनर्स हैं लंदन में, पार्टनर कंपनी जिन्होंने हमारे साथ ये फिल्म बनाई, they invested a lot of trust in women to tell the story of something which is a male dominated sport. Cricket is not a female sport, it's heavily male dominated, not just in India but all over the world. So अब that's why I say with WPL coming in, I think दिलचस्पी थोड़ी मेरी cricket में बढ़ रही है. And I'd like to see what it does for women in sport in general, not just in cricket but in general across sport in India and the world. Absolutely, and very beautifully you said, and hats off to all the women power of this universe, I would say. Well, we have seen women are shattering the glass ceilings everywhere, and they are coming out and out, rising and shining. That's a matter of pride for all of us. But Supriya, I must ask you that you have told me everyone out of that, most of them were women. Does that actually make a difference when you're working all together with a female crews? Well, Namita, for me, my personal story, it made a massive difference. I'll tell you why. Because 1 month, ये मेरी film commission हुई. And in 1 month, I found out that I was pregnant with twins. Oh. So you can imagine, for me, this was hitting it out of the park one after another. Pehle to I wasn't sure that I'm going to be allowed to complete this film, because you have all these preconceived notions. आप pregnant woman हो, आप cricket पे film बना रहे हो, आपको travel करना होगा, क्या आपका network आपको allow करेगा ये करने. उस समय COVID चल रहा था. So as a woman, there are so many factors that can be limiting. But I realized, ये limitation हम अपने आप पर खुद लगाते हैं. Because if we think we can't do it, we will not be able to do it. But मेरे लिए it was a sixer because जो हमारी Netflix की commissioning team थी, वहां पे there was a woman who commissioned the project. तो वहां से शुरुआत हुई. जो हमारी एक लंदन की टीम थी, वहां पर एक बैलेंस था, जो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे, women and men. लेकिन जब मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, of course it made a difference that there were women that I was talking to, because I felt कि वहां पर थोड़ी सी support मिल जाएगी, थोड़ी understanding, because they would have kind of gone through this in their own journey. So it was incredible to get that support. And of course, with more women in positions of leadership in the film business, I think काफी कुछ change हो सकता है. But I also believe that you should be the change that you want to see. ये गांधी जी ने बहुत टाइम पहले कहा था, and it's applicable even today and will continue to be applicable, is अगर आपको कुछ करना है, you have to believe कि आप कर सकते हो. So right from picking up a subject which is male dominated for my directorial debut, being cricket, to then working through my pregnancy and even after I delivered my babies, I think it's been a huge celebration at various levels. And I'm very grateful for the team that I have. It takes a village to actually make a film like this come alive as well. So right from, the team of commissioners to people that I worked with, to people at home, I would say that, that support is something that can help you soar. और वो support की बहुत जरूरत है अगर आपको कुछ करना हो तो. तो पहले तो congratulations for being a mother of two. Thank you. कहते भी है ना, something incredible happens when a woman supports a woman, है ना? And that happened with you. Absolutely. I mean, I think there is no power
than that woman power, because you understand each other so much. And I think जो incredible बात ये है कि women are taking control of their narrative. सिर्फ घर पे नहीं, हम सिर्फ घर पे नहीं dictate कर रहे हैं कि हमें क्या करना है. We are also now doing it in the workplace, so we are owning it all together. हम अपनी जिंदगी जैसे हम जीना चाहते हैं हम क्राफ्ट कर रहे हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा ये तभी हो सकता है जब आपके पास सपोर्ट हो. तो ये पूरा इकोसिस्टम जब चेंज होगा, आई थिंक we'll see more women in these positions of power doing the things that they want to do. Because let's say, a happy wife is happy life, happy mother makes a happy home. All these things are so important. But I have to say I'm grateful to the incredible team that I had, जिन्होंने ये मुझे सपोर्ट किया इस करने के लिए, ये करने के लिए, ये फिल्म बनाने के लिए. Absolutely. One thing is for sure, whenever I am doing a program on or arranging any good event on women empowerment, I'm going to call you for that. I would love that, Namita. Bilkul. I would absolutely love that, because you're right. From each other, we derive that support in each other. And if I can do it, I'm sure so many other women can do it. So yes, yeah. Absolutely. Achha, can I ask, why only documentaries? Why you're not making feature films? So, Namita, मुझे ये लगता है कि इंडिया में इतनी सारी स्टोरीज हैं हर नुक्कड़ पर. सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में नहीं, आप रूरल एरियाज में भी जाओ. मैं बिहार गई हूँ, यूपी गई हूँ. मैं पहले इलेक्शंस कवर करती थी, तो हार्टलैंड से मैं लोगों को, मैं अमेठी में रही हूँ जहां पर कुछ होटल नहीं था, कुछ नहीं था. तो हम ऐसी ऐसी जगहों पे रहे हैं एज जर्नलिस्ट, और आप ऐसे लोगों को मिलते हो कि आप उनकी कहानी सुनोगे ना, आपको लगेगा कि असली हीरोज को छोड़ो जो हमारे बिग पिक्चर पे आते हैं, जो बॉलीवुड में आते हैं, ये मेरे हीरोज हैं, जिनकी स्टोरी इतनी compelling hoti hai कि you feel like, wow, I want to put you there. I think people need to know your story because you can inspire so many of us. Of course, we like song and dance, and Bollywood is great, and we need to switch off our minds. Not just that, Bollywood today is tackling some real issues as well and putting them on the big screen, which is great. Lekin ye jo non-fiction की stories hain, I feel I, as an individual, and my company, we're rooted in the craft of telling non-fiction stories, bringing real stories to life. जो ordinary people हैं, जिन्होंने extraordinary चीजें की हैं, हमें उन पर चर्चा करनी है. That's the end goal. We want to make a film and we want people to talk about the incredible work that people are doing everywhere, in every walk of life, whether it's a mother at home, whether it's an old man in an office, whether it's a little child who's doing something in the village. This story is everywhere, Namita. और अगर आप उसमें चले जाओगे, you'll realize there is so much in our country to tell. So I'm very passionate about telling these stories, and I pray that we have enough of an audience that filmmakers like me can continue making documentaries and don't have to even think about the other genre of films. There are enough and more people doing it and doing it very well. I want to make these films and make heroes of ordinary people. That's what I'd like to do. And I love the fact that you told me that you went to the rural areas, and India is actually what we see in the areas and not in the urban ones, right? बिल्कुल नमिता. I mean, मैं I had the good fortune of studying in London, तो और मैंने BBC के साथ काम किया. तो जब मेरी टीम आती थी लंदन से, जब हम इंडिया में फिल्म करते थे, मैं देखती थी वो कहीं पर भी, कहीं पे नुक्कड़ पे कुछ देखेगी, उनके लिए इट्स वाओ, और हमारे लिए these things are so ordinary क्योंकि we are born into all this, we see all of this every day. But there is so much marvel in everything that you see around, even in a slum. If you choose to see the glass half full, you will. And I feel wo mera nazariya badal gaya by, meeting these sort of people and working with people who could show me what was so obvious to my eyes, and, which I didn't really think was so amazing. So yeah, I feel like India is full of stories, और हमें ये बताना चाहिए, हमें ये चीजें दिखानी चाहिए. Absolutely. May I ask you, Supriya, how do you conceive your stories, for your documentaries, the subjects you work on? So, Namita, it takes, अगर आपको एक solid बंदा मिल गया ना जो अपनी story बता सकता है, he is your story. Because you want people to tell you their story, be able to express to you. It's very hard to get people to learn to do this. So of course, if you find someone who's a natural, who's willing to tell all, that's your first win. But मेरे काम में मैंने ये भी देखा है, मैंने एक Netflix के लिए not so controversial food पे एक story बनाई थी. It's called Street Food Asia, जो दिल्ली का episode है. उसमें एक टिक्की वाला है जिसको हमने ढूंढा
उसको खुद को अपनी कहानी नहीं पता थी, यू नो, ही डिडंट नो द हार्डशिप्स दैट ही हैड बीन थ्रू, क्योंकि ही वाज बोर्न इनटू हार्डशिप। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए ये चीजें इतनी ऑर्डिनरी हैं जो हम हार्डशिप्स एंड्योर करते हैं, कि इट टेक्स एन आउटसाइडर टू टेल अस व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। आपने ग्लास सीलिंग, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग की बात की, आई फील इंडियंस ब्रेक द ग्लास सीलिंग एवरी डे, you know, and we just don't realize it because this is the life that we lead. So because I have a platform, I feel very lucky that I can, you know, creatively tell these stories so that they reach a wider section of people. And that's what I would hope, is that that pool of people who watch stories on real people who are real heroes, just, I hope that keeps getting bigger and bigger. You know, don't look for masala, don't look for scandal. In Caught Out, you know, you'll not find masala. You'll find hard facts that are presented in a creative way, which will hopefully engage you enough to watch the film. And we are really loving it. And I would say all the very, very best to you for keep doing this stuff, bringing out the facts in front of us. और हम ऐसे ही आपको आपकी documentaries देखते रहे, आपसे प्यार करते रहे. Nice to talk to you. Have a nice day.